Assalamu alaikum everyone and hello. My name is Shaheryar Brohi and I have brought this show, The Marketing Hub, on CxO Global Forum. CxO Global Forum is an emerging knowledge sharing platform for global thought leaders to help build a global impact in technology, disruption, innovation, and transformation. CXO believes in change, and that can be done only through bringing thought leaders from all walks of life to drive towards a greater knowledge economy. So, in this show, we will be talking to various marketing wizards and media gurus from the industry, from various sectors of industry in Pakistan. Today is the first episode, and today our guest is Mr. Faisal Sheikh from Jack of Digital. Assalamu alaikum, Faisal. How are you doing? Well, Islam Sharia, thank you very much for making me the guinea pig of your series. Good to see you. And so, Faisal, आप मुझे बताएं एक चीज कि a lot of people know about you like Faisal Sheikh from Jack of Digital, but they don't know the struggle Faisal has done over past year couple of like decades. So basically, पहले Zabist, then उसके बाद McMaster, then MIT. Could you please shed some light on these accomplishments of yours? I won't call them accomplishments. I would say they are certain milestones that I've managed to reach. Uh, Accomplishment is when you get to the top of the ladder. I think digital specifically and professionally, career wise, it's still a long way to go. So I have spent literally over 20 years in the industry. I've worked in multiple countries, worked with multiple organizations, uh, mostly focused on digital. And when I initially started talking about digital in Pakistan, people used to laugh their head off, saying this is something that is never going to happen in Pakistan. And this is the time when we still had charges for incoming phone calls. People was just getting used to the idea that there is a way you can send text messages. So nobody had smartphone, nobody had thought there could be smartphones, there could be internet delivered over uh, 3G 4G networks, now about 5G. We are still eons behind rest of the world, but we seem to be moving in the right direction. I wouldn't say we seem to be moving in the right direction. It is a slow pace. Well, I think these baby steps always lead us to uh, if we are doing something right, तो obviously वो हमको एक सही डायरेक्शन में ही जो है ना वो लेकर जाते हैं. So Zabis, then you did masters in ECRM. So थोड़ा सा बताएंगे what was ECRM about at that time? Because people now they're not much into it, to be very honest. So Okay, so what ECRM was when I started writing my thesis, I had no clue what ECRM is and what it could be. So it stood for Electronic Customer Relationship Management. So my background before that, my MBA was a bio-majors in marketing and MIS, interesting. and so it was a. So I didn't want to do finance and like numbers. Uh, HR was very boring. Simple admin was nothing to write home about. So by default, it was marketing. And the MIS was just starting to creep up into the radar. Internationally, people were talking about it. How does management information systems plug into or will plug into business technology moving Right. forward? So that's why I decided to do that at a kind of natural progression into electronic customer relationship management. And the idea was how would the real world connect to data? Today, we call these platforms data management platforms or DMP for short. And they had, it's a continuous evolution and it keeps on improving, it keeps on helping people understand how data can enrich marketing activities. uh, बहुत सिंपल उसकी एक्सप्लेनेशन अगर हम आज देखें तो your what your debit card is today is something that links you back for everything. So the Yeah. bank knows how much money you make, where you spend it, when you spend it. पहले तो ये होता था ना सैलरी बैंक में चली भी गई तो आपने जाके लमसम अमाउंट निकाला और आप उसके बाद ऑफ द ग्रिड हो गए, किसी को नहीं पता Exactly. आप क्या कर रहे हैं.
मगर डेबिट कार्ड, डिजिटल पेमेंट्स और इन सब चीज़ों की वजह से ये हो गया कि आपको ये चीज़ें पता चलनी शुरू हो गई कि लोगों का स्पेंडिंग पैटर्न क्या है। पहले पैनल स्टडीज़ होती थी, अब वो प्योर डेटा फॉर्म के अंदर, रॉ फॉर्म के अंदर आ रहा होता है कि यार रात को 12:10 पे मैंने मैकडोनल्ड से कुछ ऑर्डर किया, ठीक है। हम्म, तो वो वाली चीज़ें जो है वो ट्रैक होनी शुरू हो जाती हैं, एंड देन यू कैन यूज़ दैट इंफॉर्मेशन टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन एक्सरसाइजेज, योर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स कैन बी डिलीवर्ड बेस्ड ऑन दैट। तो ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। तो हाउ डिड डिजिटल मार्केटिंग इवॉल्व इन पाकिस्तान? मुझे एक ये क्वेश्चन है, बिकॉज व्हेन आई वाज वर्किंग विद वन ऑफ द म्यूचुअल फंड्स कंपनीज इन 2010, so someone came up to me and he said कि this is my वेबसाइट, दिस इज माय पोर्टल, और इस पे जो है आप अपना एनआईटी का ऐड लगाएं। तो मुझे समझ में नहीं आया, मैंने कहा मैं एनआईटी का ऐड लगाऊंगा तो हाउ विल आई नो कि मतलब उस ऐड से लोग कहाँ जाएंगे? So I was quite confused about it because I was into brand and media, and we were doing out of home and activations and road shows and all those things. या ज्यादा में ज्यादा कर दिया तो टेलीविजन पे एडवर्टाइज कर दिया, स्पॉट्स चला लिया अपने, या स्पॉन्सरशिप ले ली। सो 2010 की बात है। सो कितना टाइम पहले ये चीज जो है ना, हाउ इट ऑल स्टार्टेड, एंड यू नो पाकिस्तान में, आई नो यू आर वन ऑफ द पायनियर्स इन दिस इंडस्ट्री, सो हाउ डिड इट ऑल स्टार्टेड? कैन यू प्लीज अच्छा, इस पे थोड़ी सी बिफोर रोशनी आई डालें? गेट इनटू दैट, आई डू नीड टू नीडल यू ऑन योर पास्ट, ऑन योर चेकर्ड पास्ट, राइट? जब एनआईटी की एनुअल रिपोर्ट की बात हुई थी, डू यू रिमेंबर दैट? तो एक गुलदस्ता Yes, I बनाया remember गया था that. उसके ऊपर। Yes. Right, so again, somebody like me focused on digital, working on a bouquet of roses for an annual report, right? Okay, Yeah, we can discuss that at another time, at a later. more appropriate time. Exactly. But the whole thing is that we haven't evolved yet. We've Yeah, just started doing stuff. अभी yeah. भी कॉन्वर्सेशन जो हो रही होती है वो इस जगह हो रही होती है कि यार मेरी ऑडियंस है ऑनलाइन कि नहीं है। Hmm. In the last let's say last 10-15 years, जो चेंजेस आई हैं लोगों के आउटलुक के ऊपर, वो उनके थॉट प्रोसेस में अभी तक नहीं आई है। तो वो आगे तो देख रहे हैं कि यार हमें डिजिटल एडवर्टाइजिंग करनी चाहिए, मगर क्यों करनी चाहिए का उसका अभी तक जवाब नहीं है किसी के पास। और ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं बेसिक्स, जब आपकी बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग प्रॉपर हो। इस वक्त एक Exactly. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई जाता है, रिक्रूट होता है, असिस्टेंट मैनेजर बनता है, एबीएम बनता है, उसके पास एक डॉक्ट्रिन आता है कि Hmm. वी नीड टू रन एड्स टू प्रमोट एक्स वाई एंड जी प्रोडक्ट। ओके फाइन, and they do to their best of their ability. They come up with a creative concept. They make press ads. They go with out of home. They do everything, and they start calling it IMC, integrated marketing communication. Yeah, मगर उस लेवल के ऊपर उस बंदे या बंदी को ये नहीं पता होता कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और ऑब्जेक्टिव क्या होता है मार्केटिंग में। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज टू मेक मनी फ्रॉम yeah. द प्रोडक्ट Do ऑफरिंग दे sales. हैव, राइट? Yeah, ठीक है। अब वो किस तरह से होगा? तो पीपल सिटिंग एट द टॉप, एंड अनफॉर्चुनेटली दिस इज स्टिल द प्रैक्टिस, सिटिंग एट द टॉप फॉर्मुलेट दोज प्लान्स एंड जस्ट गिव मार्चिंग ऑर्डर्स डाउन द लाइन। और होता यह है कि इवन आज भी, वेरी रिसेंटली, आई मीन 2 weeks ago, we had a campaign planned by an organization which got pulled at the last minute. And by last minute, I mean couple of hours before it was supposed to go live, कि जी oh, हमारे पास सीईओ से अप्रूवल नहीं है। तो अगर 10 लेयर ऊपर उससे सीईओ है और सीईओ ने अप्रूवल देनी है कि एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलेगी या नहीं चलेगी, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि अभी तक इंडॉक्ट्रिनेशन किस लेवल की है। क्योंकि जो अब सीईओ बना हुआ है वो आज से 20-25 साल जो है पहले जो है वो इसी प्रोसेस के ऊपर गया था और उसने इवॉल्व किया ही नहीं। ठीक है, कि यार लोगों को एम्पावर करना पड़ता है। दैट इज वाई यू हैव टीम्स, दैट इज वाई यू हैव पीपल एंड अ yes. हायरार्की, राइट? स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जब तक क्लेरिफाई नहीं होंगे, आई एम सॉरी अबाउट द बैकग्राउंड नॉइज, It's okay. hopefully it will settle down in a few minutes. So what used to happen is still happening, but the pace of that has changed.
अब क्या हो रहा है कि डिसीजन नीड्स टू बी डन एंड नीड्स टू बी टेकन ASAP, और वो जनरली आज डिजिटल के दौर में ट्रिगर कर रहे होते हैं कि किसी सोशल मीडिया के ऊपर कोई पोस्ट आ जाए अगेंस्ट द ब्रांड, Yes. and everybody starts scrambling. And there are tons of examples of brands in this country who've jumped the trigger in responding to those comments, creating massive campaigns in response to those comments, and creating an environment which is more detrimental to the brand. Right? Yeah, hota basically वही the problem is that delegation of authority. If you delegate, unfortunately, हमारे पास ये चीज होती है कि अगर मैं डेलीगेट करूंगा अपने जूनियर्स को, मैं उनको बड़ा बनाकर ही और ज्यादा बड़ा बन सकता हूँ। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो यही है कि जी एक चीज अपने हाथ में ही रखनी है। वो जो बात अब वही कर रहे थे कि सीईओ साहब से अप्रूवल चाहिए। So yes, that has happened with me as well in my career a lot of times. But again, that is part of the system, I guess, and that is part ठीक of the है, तो company फिर culture. हमने इवॉल्व नहीं किया, राइट? अभी Hmm. हम बिल्कुल डार्विनियन प्रोसेस के हिसाब से वी आर स्टिल अ सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? देखिए ऑर्गेनिज्म बेबी की जगह में स्टेप्स लेके ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व कर, किया तो है मेरे हिसाब से। ठीक है, ठीक पहले है? जिस अच्छा, तरह द हम वे वी यूज्ड टू लुक एट थिंग्स अर्लियर, थिंग्स आर नाउ अ लॉट डिफरेंट नाउ। द थिंग्स आर बीइंग डन, मतलब marketing ले लें आप, digital was not there, mobile phone mobile marketing was not there for like 15 years back. इतनी ज्यादा चीजें जो थी ये थी नहीं कि मतलब आप इस तरह आपके पास जो है वो प्रोडक्ट्स की सेल्स के लिए कोई चीज आए। देयर वाज अ टाइम, मैं उस एवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता वी आर गोइंग ना। आप जिस चीज की बात कर रहे हो आप बिल्कुल सही बात कर रहे हो। जो बात आपने की वही आपने की कि डिसीजन एम्पावरिंग वाली बात जो है ना, वो उस चीज में हमने डेफिनेटली इवॉल्व नहीं किया है। तो यार वही असल ऑब्जेक्टिव की बात है ना, इफ ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट नोन, हाउ कैन समबडी प्लान एंड एक्सिक्यूट अ कैंपेन? ठीक है? हम्म। जिस भी लेवल के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम यही होता है कि एम्पावरमेंट तो बात की बात है, इंफॉर्मेशन भी नहीं आती, राइट? सो इन ऑर्डर फॉर अस टू इवॉल्व इनटू अ मच बेटर marketing based organization, people need to know what the objective is. Is it sale this year? Is it brand awareness this year? Is it pure reputation building? जो भी चीज़ करनी है उस लेवल के ऊपर आदमी जाके करना शुरू करता है। तो अगेन हम्म। एवोल्यूशनरी स्टेज में हम बहुत नीचे हैं, और hopefully we will evolve at a faster pace by learning from mistakes rest of the world has made. Rest of the world is moving at lightning speed. Again, on an हम्म। average हमारे यहाँ अभी तक डिजिटल स्पेंड जो है बहुत लिमिटेड है, ठीक है? हम्म। 5%, 10%, और उसको जो स्क्रूटनाइज किया जा रहा होता है वो इस लेवल के ऊपर किया जा रहा था कि वो 95% ऑफ द बजट है, ठीक है? वाई इज दिस हैपनिंग, व्हाट विल हैपन, वाई शुड आई पे, वाई शुड आई डू दिस, why do I need special creators for this? Again, that is all to control 5% of the spend. So at the back of their mind, people know that this medium has a lot more impact, even with a smaller budget, than what you would on a conventional media. कि टीवी की campaign का क्या है? यार अभी cricket World Cup, there were so many people watching it online, okay? And brands were still focusing that they need to run the first ad on the first slot of the first break, sponsor the first ball on TV, put a clock over there, break wickets on the screen, and that's pretty much it, right? तो हमारा थॉट प्रोसेस वो वहीं का वहीं है। पीटीवी के दौर में जब लोगो घूमा करता था तो हम वहीं पे बैठे हुए कि यार टीवी के ऊपर नजर आता है। मसला ये है क्योंकि द गाय सिटिंग एट द टॉप इज स्टिल इन फ्रंट ऑफ दैट स्क्रीन, पीपल फील वेरी सेफ, राइट? कि हमारा एड चल रहा है, ठीक है? बिल हम्म। बोर्ड्स के केस में यही होता है ना कि यार जहाँ से द बिग बॉसेस ड्राइव बाय वहाँ पे लगा दो तो ज़िंदगी सुकून रहेगी, राइट? डिजिटल के अंदर हमारे पास बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं। लोग कहते हैं यार हमने कैंपेन चलाई हम्म। और हमने टारगेटेड कैंपेन चलाई है, और मगर हमें ऐड नज़र नहीं आ रहा, हमें नज़र यस। आना चाहिए। आर यू पार्ट ऑफ दैट टारगेट ऑडियंस? सो दे आर रनिंग कैंपेन targeting females 18 to 24 year old, ठीक है? हम्म। और a 40-year-old male is He wants to, essentially, yeah, yeah. I would say bitching about it कि यार मुझे ऐड नजर नहीं आ रहा, ठीक है? हाँ, उनका काम नहीं है ना ऐड थैंक यू देखना, वेरी आपको मच। आपके लिए थोड़ी है ऐड। बात यही हाँ, ना कि आपके लिए नहीं, ऐड नहीं है।
अगर उन्होंने इतना अच्छा ऐड बनाया था तो उनको नज़र आना चाहिए ना। लोग 3-3 मिनट की फीचर फिल्में बनाते हैं यार, यूट्यूब के ऊपर ऐड चलाएंगे, ठीक है। Hmm. स्पैन ऑफ अटेंशन हैव चेंज्ड। 7 सेकंड, Yeah. 10 सेकंड, 15 सेकंड, वो वाला मीडियम का साइज रह गया, ठीक है। स्पेशली इफ यू Right. लुक एट द कंट्री लाइक पाकिस्तान, जहाँ पे Hmm. पॉपुलेशन यंग है। नाउ अगर स्टेटिस्टिकली हम बात करते हैं तो 196 मिलियन सिम्स हैव बीन इशूड फॉर मोबाइल फोन्स इन पाकिस्तान, right? Hmm. With a population of official population of about 236 million or even 250 million, that means कि हर 4 साल के बच्चे के पास फोन की सिम मौजूद है, ठीक है। सही बात है. And then there are people like you who have 5 SIMs in the pocket and 2 in the phone, right? तो ये वाली चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब इंटेंशन वर्सेस एक्शंस, ठीक है। Hmm. इंटेंशन लोगों की ये है कि यस वी नीड टू टॉक टू एक्स नंबर ऑफ पीपल, okay, 196 million people supposedly sims are out there, यूनिक यूजर कितने हैं? 100 110 मिलियन तो हैं। जब 110 मिलियन लोग हैं, मिडल ईस्ट की पूरी आबादी इतनी नहीं है जितनी पाकिस्तान की यूनिक मोबाइल मोबाइल फोन यूजर्स हैं. पेनिट्रेशन, ठीक है। Yeah. चलो हम उसको भी कम कर देते हैं। हम कितने कम कर देंगे? आई हैवंट मेट एनीबडी इन द लास्ट एटलीस्ट 10 years जिसके पास मोबाइल फोन ना हो, ठीक है। आई एम नॉट Hmm. टॉकिंग अबाउट स्मार्टफोन्स बट मोबाइल फोन हो। तो Yeah. SMS marketing is still something which is considered digital, right? It is part Hmm. of that. There are analytics behind it. There's a whole theory behind the whole thing, right? तो वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो जब हम इस पॉपुलेशन से मूव करते हैं और इंटरनेट कनेक्शंस देखते हैं पाकिस्तान के अंदर, ब्रॉडबैंड कनेक्शंस जो हैं वो 90-92 मिलियन 3G 4G सब्सक्राइबर्स हैं। हार्ड वायर, अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ इतना डेवलप नहीं था, ठीक है। जब मोबाइल टेक्नोलॉजी आ गया, मोबाइल ब्रॉडबैंड आ गया, तो वो लैंडलाइंस और हार्ड वायर कनेक्शंस बहुत लिमिटेड हैं। टोटल if you look at the numbers and even total unique भी काउंट कर लो उनको, I Hmm. have 3 internet connections at home, probably 5 at work, ठीक है। तो 8 कनेक्शंस अगर मेरे नाम पे हैं, उसको यूनिक भी कर लो तो 3-3.5 मिलियन से ज़्यादा हार्ड वायर कनेक्शंस हमारे मुल्क में नहीं है, ठीक Right. है। तो इट्स नेग्लिजिबल, राइट। Hmm. अच्छा, उन कनेक्शंस के पीछे क्या है? ऑर्गेनाइजेशंस हैं। वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यूट्यूब पे एडवर्टाइज करती हैं, मगर अपने एम्प्लॉयज़ को ब्लॉक करके रखा होता है, यूट्यूब नहीं देखने देना, Hmm. ठीक है। And they are hoping that people in other organizations will see their ads. Right? So again, बहुत सारे thought process changes हमें करने पड़ेंगे. Yeah, it's a long I journey. You're absolutely I right. was This is I a was long journey. presenting I was presenting at one of the leading financial institutions in the country, ठीक है, couple of weeks ago, और वहाँ पे when I went in, so my deck is online, so I Hmm. don't have, practically I don't use my hard drive. मैं वहाँ गया Hmm. कि and during the conversation with them, I said I will need a decent internet connection. They said, oh yes we have, and they're supposed to have that decent connection. So they claim themselves to be a technology company with a banking license. Can't name them, but that's what their thought process is. तो वहाँ जी वो इंटरनेट तो हमारे यहाँ वो नहीं है, वो जैज़ की डिवाइस ले लें, उससे कनेक्ट कर लेते हैं, Oops. ठीक है। So you can imagine how progressive these organizations will be in the future when they have such restrictive practices at the moment. Travel outside Pakistan, you'll see nobody bothers with a Wi-Fi password anymore. They don't even bother with you registering with them anymore. और हमारे Hmm. यहाँ आज तक ये होता है, please like our page, please comment before you can make a connection on our Wi-Fi, right? तो बहुत सारी चीज़ें, again, environment, बहुत सारे लोग हैं वो कंफ्यूज करते हैं डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटाइजेशन को। Hmm. डिजिटाइजेशन इज फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू बिकम digitally enabled, Empowered. not Yeah. to market, not to market digitally. So if Hmm. you still have to visit a bank branch and give them a copy of your CNIC, that shows how progressive that organization is in terms of digitization, right? Digital marketing तो अभी दूर की बात है। फिर जब डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आते हैं तो हम ये देख रहे होते हैं कि यार अगेन फॉर द सेक ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ कि बॉस को नजर आएगा ऐड के नहीं आएगा। सो देर आर Hmm. इंस्टेंसेस वेयर वी ran campaigns for targeted campaigns, very specifically targeted campaigns, और $50 का बजट अलग साइड पे रख दिया कि यार वो जो है ना वो सिर्फ
CEO और टॉप मैनेजमेंट को टारगेट करके उनको ऐड दिखाते रहते हैं, ठीक है, ताकि वो बेवकूफ़ी के सवाल जवाब ना करें और हम अपना काम करके ऑब्जेक्टिव अचीव करके दे दें. So again, coming back to to evolve, you need to know what your objective is. You have to create pathways towards that. Very true. So, Faisal, we have a lot of platforms and channels on digital media. Like someone, I was talking to someone, they said, like I run a farm as well. It goes by the name Brohi Farm. You must be knowing about it. So I was talking to, he said कि आपने अपना एसईओ करवाया है? मैंने कहा एसईओ को आप क्या बारे में क्या कर रहे हैं? तो मैंने कहा व्हाट डू यू वांट? बोला ताकि गूगल पे सबसे पहले आए. देन समवन केम एंड ही सेड कि यार आपका कंटेंट नहीं है, तो मतलब लोगों को क्या पता चलेगा? कोई कोई ऐड क्यों नहीं है आपकी डिजिटल? मैंने कहा ओके. तो इस तरह लोग जो है बोले आपने किसी इन्फ्लुएंसर को क्यों नहीं पकड़ा अब तक? तो मतलब ये तो इनमें से बेसिकली इतने सारे चैनल्स हैं, तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस के सबसे ज्यादा वायबल चैनल, सबसे ज्यादा जो है इस तरह के कौन सा चैनल जो है आप क्या समझते हैं इसमें इट्स द मोस्ट आई वुड से यूजफुल चैनल फॉर अ स्टार्टअप, फॉर अ स्टार्टिंग प्रोडक्ट? किसी ने अपनी सर्विस स्टार्ट किया है, किसी ने कोई भी प्रोडक्ट स्टार्ट किया है, उसके लिए. Okay. So again, sorry for the sake of humoring myself. रात को 2 बजे के बाद टीवी पे ऐड चलाना सबसे इफेक्टिव है. ओके. ठीक है, बिकॉज यू नो पीपल आर वाचिंग टीवी. ठीक है यार, डिजिटल के ऊपर जो सब द ब्यूटी ऑफ डिजिटल मीडिया इज कि यार ऐड उस वक्त डिलीवर होता है जिस वक्त कोई डिवाइस पे उस साइट के ऊपर उस चैनल के ऊपर सामने होता है. ये टीवी ऐड की तरह नहीं चल रहा था कि यार आपने GRPs और CPRP मैनेज करनी है तो हम इस तरह से अपना एयर टाइम कंज्यूम करें. एग्जैक्टली. ठीक है, इट इज़ नॉट कि यार मैं 3+ के ऊपर प्लान करूँ, 70% के ऊपर प्लान करूँ. मेरे पास ऑप्शन मौजूद है कि मैंने 3,000 लोगों को अपना ऐड दिखाना है 12 दफ़ा. आई हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर दैट डिलीवरी, राइट. और मुझे मास ऑडियंस के पास जाना है तो वो भी कर सकते हैं. अच्छा, अब उसका पर्पस तो हमें पता है कि ठीक है यार, लेट्स से टेक योर एग्जांपल, यू वांट टू सेल स्ट्रॉबेरीज ऑनलाइन, ठीक है, और ऑफलाइन. यू नीड टू टेल पीपल अबाउट इट दैट यू हैव स्ट्रॉबेरीज, हाउ कैन दे गेट इट. ये मैसेज जो है ये कंटेंट बन गया. ठीक है, अब उस कंटेंट को अगर हमने पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में दिखाना है तो उसके लिए हमें एक अच्छा सा किचन चाहिए और अच्छा सा डाइनिंग टेबल चाहिए. ठीक है, उस डाइनिंग टेबल के ऊपर कम से कम दादा दादी तो ना हो तो कम से कम एक तो उनमें से एक अल्लाह को प्यारा हो गया तो हम कुछ नहीं कर सकते, चलेगा. ठीक है, वो जनरली ये होता है कि यार हम थोड़े से पैसे एक एक्स्ट्रा मॉडल को क्यों दें, इससे काम चल जाए. सही. एक साहब या साहिबा को बाल सफ़ेद करके बिठा दिया टेबल के ऊपर. उसके बाद 2 बच्चे ज़रूरी हैं. ठीक है, क्योंकि सिर्फ लड़का होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, सिर्फ लड़की होगी तो अच्छा नहीं. किसी भी ऐड में आपने देखा नहीं होगा कि 2 लड़के या 2 लड़कियां हो किसी काम में. And we've seen it around ourselves. People do have more than 2 kids as well, less than 2, and of varied age. ठीक है, बट ये जो है ना, ये बोलने वाले उछलने कूदने वाले ज़रूरी होते हैं. ठीक है, उसके बाद हम करते ये हैं कि किचन पर अच्छा सा किचन होना चाहिए. उसमें एक फ्राइंग पैन होना चाहिए जिसमें मैं समोसे जैसे ही डालूं वैसे ही वो ब्राउन होके तैयार होके निकल के आ जाएं. और फिर हमने सबने टेबल के गिर्द बैठ जाना है. और अगर रमज़ान होगा तो अजान की आवाज़ आ जाएगी, वरना एक अच्छा सा जिंगल होगा. अब मैं इसके ऊपर किसी भी ब्रांड का लेबल लगा दूं, काम हो जाए. I have not seen a different concept in cooking oil in any one of these categories ever. मगर एक चीज़ हम हमेशा भूल जाते हैं, ब्रांड कलर्स बहुत ज़रूरी हैं. वेरी ट्रू. तो की फिगर हैज़ टू बी इन येलो क्योंकि ब्रांड का कलर है. ठीक है, और टेक्स्ट मेरा रेड से है तो रेड दुपट्टा ज़रूरी है. घर के पर्दे लाल और पीले होंगे, कुर्सियाँ जो हैं वो लाल और पीली होंगी. ठीक है, सब चीज़ें करनी. उसके बाद फिर मैं सर पकड़ के बैठ गया, यार ये तो मेरे ब्रांड का नहीं, ये तो मेरे कंपीटिंग ब्रांड का इश्तेहार लगने लगा क्योंकि उनके भी वही कलर है. फिर उसके बाद मैं करता हूँ, उसके बाद मैं ऐड चलाता हूँ तो उसके ऊपर लोगो लगा देता हूँ ताकि सबको याद रहे कि यार मैं इस ब्रांड की. कैन आई टेक नेम्स ऑफ द ब्रांड्स? नो प्लीज डोंट. come on, you're taking the fun out of it. No, it's all right. तो वो लोगो लगा दिया
ताकि पता चले कि जी ये मैंने 1.5 मिनट का ऐड मैंने बनाया. ओके फाइन. द फनीएस्ट थिंग हैपेंस व्हेन इट गोज, और ये मैंने 4K के अंदर 35 मिलीमीटर के ऊपर सब के ऊपर ऐड शूट किया. जिस वक्त वो कंज्यूमर को ऐड डिलीवर हो रहा है ना टीवी पे, वो बहुत तीर मारा रहा है, 480p पे डिलीवर हो. ठीक है. और पहले दिन जो है ना वो 20 सेकंड का चला के मेरी तो जेब हो गई खाली. तो अब 7 सेकंड का ही चलेगा. यानी कि आएगा क्या कि फैमिली का शॉट आएगा, पैक का शॉट आएगा और टाइम खत्म हो जाएगा. जो मैंने इतना लंबा गाना बनाया, मैंने 3 महीने एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ सर खपाया, प्रोडक्शन कराई, उसके लिए मैं थाईलैंड गया, इतना टाइम ज़ाया हुआ, इतने पैसे लगे, एंड रिजल्ट 7 सेकंड का ब्रेक बम्पर रह जाता है. यस. अब जो है कहानी आपको पता है कि नहीं पता, आप खुद समझ लें. क्योंकि अगर लॉन्च वाले दिन आपने टीवी नहीं देखा, उसके बाद आपको इश्तिहार समझ नहीं आएगा. आपको सिर्फ पता चलेगा कि ये साहब इश्तिहार ज़रूर चला रहे हैं अपने ब्रांड का. उसकी कहानी क्या थी क्या नहीं. अच्छा, डिजिटल has created this way of people trying to understand how people react to these ads. So when you put that same ad on digital media, you start getting comments, and you start getting likes or dislikes or disappointments or emojis and all that kind of stuff, right? And that immediately starts giving you कि यार reactions क्या हैं लोगों के. और फिर आप देख रहे होते हैं कि यार ad skip कितने लोगों ने किया. तो अगर मैं 20 सेकंड का ऐड चला रहा हूँ और 2 सेकंड बाद मैं उसको स्किप कर सकता हूँ, तो आपका मोर देन 50% तो स्किप हो गया. तो टीवी के ऊपर व्हाट डू यू थिंक पीपल आर डूइंग विद दैट ऐड? आर दे पेइंग अटेंशन टू इट? आर दे फ्लिपिंग चैनल्स? Flipping आर दे channels. Yeah. आर दे गोइंग टू द बाथरूम? आर दे मेकिंग अ कप ऑफ टी ड्यूरिंग द ब्रेक? तो बहुत सारी चीज़ें हैं फैक्ट. मगर डिजिटल जो है ना बहुत ब्रूटल है इस मामले के अंदर. तो बहुत लोगों को इस बात से डर भी लगता है. यार अगर डिजिटल पे चलाया ना तो सारी कहानी सामने आ जाएगी कि यार इसके साथ हुआ क्या. तो उसके लिए लोग एक्सक्यूजेस बनाते हैं कि यार माय ऑडियंस इज नॉट देयर. देयर आर ओवर 90 मिलियन कनेक्टेड पीपल इन दिस कंट्री. ठीक है. दैट मीन्स दे हैव अ सेल फोन, दे हैव अ सिम, दे हैव अ डेटा कनेक्शन, एंड दे आर ऑनलाइन. Right. डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की डिफरेंट रीच है. एंड दिस इज अगेन रिलेटिंग टू योर अर्लियर क्वेश्चन कि यार कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए. डिलीवर तो ऐड उसी वक्त होगा जब वो बंदा या बंदी वो टारगेट ऑडियंस प्लेटफॉर्म खोलेगा और उसके सामने आएगा. ठीक है. Right. डिलीवर उसी वक्त होगा व्हेन यू आर विलिंग टू पे द प्राइस फॉर दैट ऑडियंस. ठीक है. तो जहाँ पे इन्फ्लुएंसर की बात आती है, जैसे इन्फ्लुएंसर, क्रिएटर एंड ऑल दीज आर नाउ फैंसी टर्म्स फॉर सेलिब्रिटीज endorsing your product. So Lux in the old days used to bring in film stars like Barbara Sharif and all these to endorse their product, right? So Right. essentially, in today's day and age, it is a younger version of those celebrities who've emerged and carry a certain amount of weight. The thing is कि वो भी अगर कुछ कह रहे हैं ना तो वो एक हद तक ही जाएगा. उसके बाद you have to advertise. अब whether you take that piece of content and advertise, or whether you create another feature film and use that to push your product, the process, the objectives always remain the same. It is just the medium that is changing. तो अगर मैं टीवी के ऊपर इश्तहार लगा के कहूँ, और बहुत ब्रांड्स ये करते हैं कि ये जी मेरे पेज को लाइक कर लीजिएगा और मुझे फॉलो कर लीजिएगा और मुझसे इस वेबसाइट के ऊपर ख़रीद लें. और क्योंकि मुझे .com डोमेन चाहिए थी, तो मुझे अपने मतलब की डोमेन तो मिली नहीं, तो मैंने उसके आगे 2-3 अल्फ़ाबेट जो विच यूज्ड टू मेक सेंस टू मी, वो मैंने ऐड कर दिए. ठीक है. तो अब किसको याद रहेगा? टीवी के ऊपर तो I can't click on it and I can't exit to a URL. So I have to remember. Next time you put out a billboard and somebody puts a domain on them, please ask them what's the value that domain name is going to add. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें. So everything, yes, you need content, just like you needed content to advertise on TV. You need endorsement, just like you used to need it on TV. So all Right. those things, all those principles remain the same. It is just a difference in execution, and you have to understand your audience. Audience will react positively or negatively. Digital audience are a lot more involved. पहले again, both of us are old enough to remember कि एक टेल चला करती थी हर पीटीवी के प्रोग्राम के बाद. ठीक है. जिसका बेसिकली आप एड्रेस कर रहे होते थे प्रोग्राम के नाम को,
और पीटीवी इस्लामाबाद को वाया मेल जाया करता था, पीओ बॉक्स होता था, ठीक है। हम्म। और उसके ऊपर आप अपने कमेंट करते थे, उसके ऊपर आप कूपन एंट्री करते थे, उसके ऊपर लकी ड्रॉज होते थे कि यस, कितने लोग एग्जैक्टली। पार्टिसिपेट करते थे, राइट। या और राइट। आज आज जबकि अगर मैं किसी सवाल पूछूं, यार आज कितने लोग टीवी देखते हैं, कहेंगे आपकी ऑडियंस का 70% तो हम रीच कर लेंगे। हम्म। So what is that 70%? On digital, you can pinpoint one person, you can customize ads, you can do everything. But again, if that ad does not deliver the message, it's useless. So you can इट्स create all the यूजलेस content डेफिनेटली। you want, or you can create हम्म। all the content you want. Okay, you can do all the SEO, but if you're not presented in a proper manner at the proper time, so अगर किसी को तुम डिनर की जी मैं डिनर डील ऑफर कर रहा हूँ और अगले 30 मिनट में आप ऑर्डर करते हैं तो आपको इतना डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है, और वो मैं सुबह 9 बजे दिखा रहा हूँ, ठीक हम्म। है, इट डज नॉट मेक सेंस। ठीक है, टीवी के ऊपर तो शायद इट मेक सेंस कि यार मैं बाय द टाइम आई वॉच द एड एंड आई रिमेंबर दैट आई नीड डिनर, तो उस वक्त तक हम्म। शायद मुझे याद रहे कि हाँ ये ब्रांड था और ये ऑफर कर रहा था। डिजिटल के ऊपर तो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होता है ना, आई या वांट इट और आई एग्जैक्टली। डोंट वांट इट, इट्स एज या सिंपल एज जस्ट क्लिक ऑफ द फोन पे दैट। सिर्फ एक क्लिक करने की देर होती है, एग्जैक्टली उस चीज या का। ये जो आप बात कर रहे हो कि आपका जो मैसेज बेसिकली राइट ऑडियंस को कन्विंस हुआ कि नहीं हुआ, जस्ट अपना एक छोटी सी स्टोरी आपको बताता हूँ। वन ऑफ माय टीचर एट जाबिस, he told us in the class कि he used to work for an OMC, so they were marketing a product which was solely for the truck drivers. So the chairman got hold of the general manager marketing and he said, "Okay, I've given you so much money. I don't see the ad anywhere. It's not in the on the roads. You have posted like you have planted so much skins on the billboards and everything, and TV पे इतना spend किया, मुझे नजर क्यों नहीं आता?" तो he said, बोलते बोलते सर आपको थोड़ी दिखाना है। Well, it's not for you. It's for the truck drivers. Because it was some sort of scheme for truck drivers कि भाई वो उसको देखेंगे तो उसके बाद फोन के थ्रू जो है उस पर एक्ट करेंगे। एंड जस्ट लाइक जो आप बता रहे हो कि वो जो अपना वो चीज है, बोला इट्स नॉट फॉर यू, इट्स फॉर द ट्रक ड्राइवर्स, आपको थोड़ी दिखानी है। सो काफी उनकी बहस चली थी इस बात के ऊपर। नहीं, only if I wasn't bound by NDAs. I could tell you stories that would raise the hair and the back of your neck कि लोग ऐसे सोचते भी हैं और इतने क्लूलेस भी होते हैं कि हम स्पेंड करने जा रहे हैं और हमें ये नहीं पता कि हम करना क्या चाहते हैं, बस हमें पैसे मिल गए, बजट मिल गया है जनाब, और साल खत्म होने वाला है, हमने खत्म करना है वरना अगले साल बजट नहीं मिलेगा। Yes, I can understand it. I know. I can relate to it actually. I can Yeah. relate to it. Yeah, both of us have been there, done that, and spent far too long in the industry. Exactly. सही सही। So Faisal, digital media की what is the contribution to the economy? What's your point of view on that? कि इकोनॉमी को किस तरफ ये चीज लेकर जा रही है, फ्यूचर में आप किस तरह देखते हैं इन चीजों को, इस वक्त क्या है, फ्यूचर में क्या देखते हैं? Okay. इस वक्त we don't have any central body that can give you figures कि डिजिटल पे क्या स्पेंड हो रहा है। एक चीज जो लोग इग्नोर करते हैं वो ये करते हैं कि there's a lot of small businesses who now have access to advertising which they never did in the days of conventional media। ठीक है, तो अखबार में इश्तहार लगाना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, टीवी पे इश्तहार चलाना अफोर्ड नहीं कर सकते, बनाना अलग बात है, ठीक है। जी। कुछ ब्रांड्स होते हैं जो पूरा साल का बजट अपना क्रिकेट सीजन में, ईद बकर ईद के ऊपर 1 दिन 2 दिन के अंदर स्पेंड करके हाई ट्रैफिक हाई वॉल्यूम डेज के ऊपर ये काम करते हैं। इफ़ यू रिलेट दिस टू व्हाट ब्रांड्स इन यूएस डू ऑन सुपर बोल, ठीक है, वो एक स्पेसिफिक ऐड बनाते हैं, एक दफ़ा चलेगा 2 दफ़ा चलेगा बहुत हुआ तो, ठीक है, और उसके पीछे वो पूरा साल अपना इन्वेस्ट करते हैं। बट दीज आर ब्रांड्स दैट आर ऑलवेज ऑन, ऑलवेज अवेलेबल ऑन डिफरेंट मीडियम। ये उन्होंने एक अपना एंकर पॉइंट बना लिया है कि इस टाइम के ऊपर हम विजिबल होते हैं और इतनी ऑडियंस के सामने होते हैं, ठीक है। सो इट्स नॉट एज मच अबाउट मूविंग द प्रोडक्ट, इट इज़ मोर अबाउट PR एंड इंक्लूजन एंड पार्टिसिपेशन, ठीक है। अच्छा, हमारे हमारे एंड के ऊपर अगर हम कैलकुलेट करना शुरू करें तो हमें कोई अंदाज़ा नहीं है कि कितना डिजिटल के ऊपर स्पेंड हो रहा है। फ्रैंकली स्पीकिंग वी डोंट इवन नो कि कन्वेंशनल मीडिया पे कितना स्पेंड हो रहा है, ठीक है।
टीवी के ऊपर अगर रैक रेट और एयर टाइम के साथ हम कैलकुलेट करना शुरू करें तो एक वैल्यू हमारे पास आएगी कि दिस इज द पोटेंशियल अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजिंग दैट कैन बी डन ऑन टेलीविजन, राइट। आपको एक टीवी चैनल का रेट पता है, आपको पता है कि पेमरा रेगुलेशंस के मुताबिक आधे घंटे में मैक्सिमम 8 मिनट एडवर्टाइजिंग होती है, 22 मिनट का कंटेंट होगा। हमारी राइट। एसेंशियली वो 8 मिनट नहीं होता, वो ज़्यादा भी होता है, कम भी होता है, इन मोस्ट केसेस ज़्यादा ही होता है, ठीक है। अगेन, टू मच मनी चेसिंग टू फ्यू स्लॉट्स, फाइनाइट है टाइम, ठीक है। तो हमारे पास उसके स्टेटिस्टिक्स नहीं है, डिजिटल मीडिया के स्टेटिस्टिक्स नहीं है, इवन दो दे आर अवेलेबल, देयर इज नो बॉडी टू कलेक्ट एंड पब्लिश रिपोर्ट्स ऑन दैट। So whatever comes in through proprietary access to platforms or through proprietary research reports. पब्लिक डेटा नहीं, बाकी मुल्कों के अंदर आपको पब्लिक डेटा मिलेगा इसके ऊपर, और वो शो कर रहा होता है कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ क्या और ये डिक्लाइन क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है। हमारे यहाँ एक इदारा है जिसको कहते हैं ABC, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन। हर मेजर लीडिंग अखबार के मास्टहेड पे लोगों के साथ लगा हुआ था ABC सर्टिफाइड। Few years ago, I had time on my hand, let's put it this way, and I went looking for ABC. I could not find it. I don't know where these guys find it. ठीक है, अपेरेंटली ये ओके। एक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का मातहत डिपार्टमेंट है जिसका अच्छा। काम होता है कि सर्कुलेशन को ऑडिट करना, ठीक है। अगर हम हाँ, बेसिकली अक्सर, हाँ अक्सर, क्योंकि ड्यूरिंग माय डेज एट स्टारकॉम एंड उससे पहले पार्क मीडियाकॉम, when we used to propose any newspaper or anything to any publication to a client, तो उधर जो था वो यही चीज आप कह रहे हो कि उधर हम सर्कुलेशन और रीडरशिप एक एक देते थे हम लोग, ठीक है जी। तो एज सच ऑथेंटिक सोर्स, मतलब एक वो, इट कुड बी सब्जेक्टिव बट इट वाज नॉट ऑब्जेक्टिव, बेसिकली वो सब्जेक्टिव चीज होती थी। तो अप्रोक्सीमेटली इतना है। शहरियार, हम्म। नान बेचने के लिए तो अखबार नहीं छपता ना, वेरी ट्रू। ठीक है। तो अगेन, एट द एंड ऑफ द डे आई कैन काउंट स्टैंडिंग एट द प्रिंटिंग प्रेस एंड सी कि यार कितनी कॉपियाँ छापी, उसमें से कितनी गई हैं बिलिंग के लिए और कितनी एक्चुअली लोगों के पास गई हैं जिन्होंने ख़रीदा है, और कितनी गई हैं उन लोगों को जिनको फ्री में जाना होता है अखबार, ठीक है। हम्म। बट एट द एंड ऑफ द डे उसमें समोसे या नान ही मिल रहा होता है, 24 घंटे वेल, बाद उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। दैट्स द डिलेमा, मतलब वो एक ही दिन की दैट्स उसकी लाइफ होती है। या एक ही दिन की या लाइफ है ना, ठीक है। तो उस लाइफ का अब टीवी के ऐड की सेकंडों में ऐड की लाइफ है, डिजिटल में ऐड अगेन इंस्टेंटेनियस, इफ समबडी डजंट लाइक इट मूव अलोंग, ठीक है। तो जो जो कॉस्ट्स होती हैं वो सब होती हैं, वो भी अप्रोप्रिएट टू द मीडियम होती हैं, क्या मेरी रीच क्या है, वो सब क्या है। अब हमारे यहाँ रीडरशिप और फ्रीक्वेंसी के ऊपर बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है ना, कि जो भी वो है सर्कुलेशन है उसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर देते हैं, क्योंकि हाउस होल्ड का साइज 6 है। अगर हम एवरेज पाकिस्तानी हाउस होल्ड देखें ना, उसके अंदर एक 2 साल का बच्चा है, एक 4 साल का बच्चा है, ये दोनों भी रोज़ बैठ के अखबार का मुताला करते हैं सुबह नाश्ते के साथ, ठीक है ना। ठीक है, आई एम वेरी क्रिटिकल इन माई ओपिनियन, बट आई एम जस्ट शोइंग यू द फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन। यस, न्यूज़पेपर हैज़ इट्स वैल्यू, ठीक है। यू फ्राई स्टफ एट होम एंड यू नो द वैल्यू ऑफ द न्यूज़पेपर एट दैट टाइम, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जोक्स असाइड, बट मीडियम्स डू वर्क, ऑल मीडियम्स वर्क। अगेन या डिपेंड्स ऑल ऑन मीडियम्स आपका वर्क, ट्रू। ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, और या उसके बाद बात करते हैं कि एफिशिएंसी आपको कहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो प्रिंट के अंदर शायद आपको एफिशिएंसी मिल जाए, बट यू हैव टू बी वेरी वेरी कैलकुलेटेड, बट यू कांट से कि because it's the leading newspaper I need to put my ad on it, otherwise इस न्यूज़पेपर को मैंने ऐड नहीं दिया तो मेरे खिलाफ खबर लग जाएगी। Again, we have to get out of that habit. Digital again helps you build your brand reputation, your presence, top of mind recall. It is not just about paid medium. Again, going back to what SEO would do for you. Okay? SEO would help people find you instead of your competitor when they need it. ठीक है। या तो अगर किसी को शू पॉलिश चाहिए है, ठीक है, वो सारा महीना उसको शू पॉलिश का ऐड दिखा के कुछ भी नहीं होगा, टॉप ऑफ माइंड रिकॉल तो बन जाएगी, मगर वो आज शू पॉलिश का ऐड देख के वो ऑर्डर नहीं देगा अगले मिनट और कहेगा कि यार मुझे 12 डब्बे शू पॉलिश के दे दो, ठीक है। ट्रू। तो
SEO works in those cases. If somebody goes in and what's the best Exactly. shoe polish Yeah. I can buy today, but that means the need has been triggered, and now is the time to talk to this person. तो Right. SEM के ऊपर बात ज़्यादा चली जाती है. SEO of course will work for you, but in a market like Pakistan where branded searches are much lower as compared to generic searches, उसकी importance है. But the cost of SEO versus the cost of running an SEM campaign kind of tilts the favor into running campaigns rather than doing SEO. Of course, you need a landing page, you need an approachable presence. अगर एक Right. दुकान है उसके बाहर जंगला लगा हुआ हो, ठीक है, और अंदर बहुत धीमी लाइटें जल रही हों, तो आपको पता होता है वो किस किस्म की दुकान है, ठीक है. Hmm. और एक आप खुलते हैं ब्राइटली लेट ओपन फ्रंट, उस दुकान के अंदर वेलकमिंग जो दुकान होती है उसके अंदर जाते हैं, तो Right. आपको डिफरेंट वो होता है. तो इसी तरह से आपकी वेब प्रेजेंस भी है, ऑनलाइन प्रेजेंस भी है. हाउ वेलकमिंग आर यू इजी टू एक्सेस, आर यू इजी टू फाइंड, डू यू लाइक टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स. एक होता है ना, आप परचून की दुकान पे जाते हैं और उससे कहते हैं कि यार एक शैम्पू की बोतल दे दो. वो Hmm. जाता है, एक लड़के को आवाज़ लगाता है, जो सीढ़ी लगाता है ऊपर चढ़ता है, वहाँ से बोतल उतारता है और उसको अपनी कमीज से साफ करता है, ला के आपके सामने रख देता है. ठीक है, ये भी एक प्रोसेस है, प्रोडक्ट वही है. Product way exactly. ठीक है, और 95-97% ऑफ आवर प्रोडक्ट्स आर सोल्ड दैट वे. वो अपनी कमीज से साफ करके आपको देता है. सारे बड़े बड़े बिल्कुल. ब्रांड्स जो हैं, जो बात करते हैं ब्रांड सेफ्टी की और ब्रांड अपील की और वो सारी चीज़ें, वो आपको परचून की दुकान पे ऊपर सैशे में रस्सी पे लटकी हुई मिलेंगी जिसके ऊपर मक्खियाँ बैठी हुई होती हैं. Hmm. ठीक है, जिस दिन मार्केट विजिट होती है उस मार्केट विजिट में तो सीनियर मैनेजमेंट उस दुकान का पता भी नहीं होता. 95% सेल जो है उस दुकान से, उस टाइप की दुकानों से होती है. मगर जाके हम देखते हैं वो 2-3%, 4% वाली दुकान है कि जी हाँ देखें हमारा एंड ऑफ आइल डिस्प्ले भी लगा हुआ है और हमारा आउटर साइनेज भी लगा हुआ है और ब्रांड एम्बेसडर भी खड़ी हुई है नाइसली प्रेस सूट के अंदर. वो सारी चीज़ें हैं. ठीक है, बट व्हाट वी नीड टू डू इज गेट डाउन टू द रियलिटी वेयर पीपल आर, वेयर इज द ट्रांजैक्शन हैपनिंग. सो इफ देयर इज एन ई कॉमर्स साइट, ठीक है, पीपल प्रेफर टू गो टू द लीडिंग ई कॉमर्स साइट्स एंड से कि यार ये सबसे बड़ी साइट्स हैं, ऑफ कोर्स, एंड देन यू पुट मनी बिहाइंड ड्राइविंग दैट ट्रैफिक टू दैट साइट, राइट. एसेंशियली इट कैन गो टू एनी साइट. कंज्यूमर ने डिसाइड कर लिया मुझे ये 12 डब्बे चेरी ब्लॉसम के खरीदने हैं, तो 12 डब्बे जिस दुकान पे आप भेजेंगे उससे खरीद लेगा ना. जरूरी नहीं कि वो लीडिंग साइट हो. As long as the experience is nice, it's perfectly okay to send them anywhere. So this is what brings the Very true. digital journey to a full conversion, right? So from the objective to what you've delivered, and part of delivery is service as well. Very true. You're absolutely right. Thank you very much, Faisal. आपके साथ सेशन जो था वो क्वाइट इंफॉर्मेटिव एंड एक बहुत ही लाइटर नोट पे बहुत सारी चीजें आपने जो है वो कन्वे कर दी. एंड हमारे जो ऑडियंस हैं डेफिनेटली दे आर गोइंग टू लाइक इट, ऑफ कोर्स, द वे यू डिलीवर्ड एवरीथिंग, डिलीवर्ड योर स्पीच एंड द One can only इंफॉर्मेशन. hope. Definitely, I know that, and thank you very much, Faisal. Would you please Thank you, Shaheryar. comment something about CxO Global? You Would you want like me to to say say something about something about CxO Global? CxO Global? Please do. I think it's an interesting forum, Sharyar, Hmm. and this is the kind of stuff it needs to bring to life and create awareness around what's really happening in the business, in the marketing Hmm. environment at the top level, and make sure that it is delivered to an audience which can learn from it. So it's a very good initiative. Exactly. Thank you. Thank you. Thank you, Thank you, Sharyar. Faisal. Okay, ji. Thank you. Okay.